हेलो एवरीवन, आज मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈਟ ਦ ਹੈਲਥ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਐਨਕਲੈਕਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ the parents of a child call the clinic and tell the nurse that their child is irritable and has a 102 degree Fahrenheit temperature after having had a routine immunization। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਨਰਸ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਰੀਟੇਬਲ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਰਨਹੀਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 2 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ the clinic protocol indicates acetaminophen 15 mg per kg is to administered every 4 to 6 hours. The child's last weight was 9.6 kg. The parent states the bottle of acetaminophen says that there are 160 mg in 5 ml. How much should the nurse tell the parents to administer for each dose? ਨਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜੈਸਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਡੋਜ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਡੋਜ਼ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਿਦ weight divided by dose in hand। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਡੋਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਆ 15 mg, ਬੱਚੇ ਦਾ weight ਕਿੰਨਾ ਆ 9.6। दोनों ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 144। ਡੋਜ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ 160 ਬਾਈ 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਸੀ 145 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 160 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਿਦ 5, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 4.5 ml, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ a family has decided to withhold extraordinary care for a newborn with severe abnormalities. How should the nurse interpret this decision? फोर ऑप्शन है अपने को। ऑप्शन ए, the newborn has no right. ऑप्शन बी, it is same as euthanasia. ऑप्शन सी, it is illegal profession practice. ऑप्शन डी, the newborn is being allowed to die. हाँ जी, राइट आंसर थाने की लगता है। The correct answer है D, the newborn is being allowed to die. Next question ਤੇ move करने हैं। थर्ड क्वेश्चन अपने को है a nurse is planning an initial home care visit to a mother who gave birth to a high risk infant. For what time of day should the nurse schedule the visit for it to be the most productive? चार ऑप्शन अपने को ने। पहली ऑप्शन की गल करिए तो अपने कहती है when the husband is out of home। ऑप्शन दूजी की गल करिए at a time the mother is feeding the infant। ऑप्शन सी, at a time that is convenient for the family। ऑप्शन डी, when the nurse can spend time with the family। हाँ जी, तो राइट आंसर की लगता है? The right answer is C, at a time that is convenient for the family. Next question, what is the first action a nurse should take before administering a tube feeding to an infant? Option A, irrigate the tube with water। Option B, offer a pacifier to infant। Option C, slowly instill 10 ml of formula। Option D, place infant in the Trendelenburg position। हाँ जी, राइट आंसर की है? The right answer है B, offer a pacifier to the infant। Next question, which nursing intervention provides the most support to the parents of an infant with an obvious physical anomaly? Option A, encourage them to express their concerns। Option B, discourage them from talking about their baby। Option C, assure them not to worry because the anomaly can be repaired। Option D, show them post-operative photographs of infants who had similar anomaly। तो the right answer ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? And the correct answer है A, encourage them to express their concerns। नोट डाउन कर दीजिए ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ।
Sixth question. When picked up by a parent or the nurse, can 8-month-old infant screams and seem to be in pain. After observing this behavior, what should the nurse discuss with parent? चार ऑप्शन अपने को मिले. Option A, accident and the importance of their prevention. Option B, limiting play time with other children in the family. Option C, any other behavior that the parent may have noticed. Option D, food and specific vitamins that should be given to infants. तो the right answer की लगता है? The right answer is C. Any other behavior that the parent may have noticed. Next question की गल करते हैं. A 1-week-old infant has been in the pediatric unit for 18 hours following placement of a spica cast. The nurse observes a respiratory rate of fewer than 24 breaths per minute. No other changes are noticed. Because the infant is apparently well, the nurse does not report or documentation the slow respiratory rate. Several hours later, the infant experiences severe respiratory distress and emergency care is necessary. What should be considered if legal action is taken? अपने को 4 ऑप्शन ने. ऑप्शन ए अपने को है most infants respiration are slow when they are uncomfortable. Option B, the most respiration of young infants are irregular, so a drop in rate is unimportant. Option C, vital signs that are outside the expected parameters are significant and should be documented. Option D, the respiratory tract of young infants is underdeveloped and the respiratory rate is not significant. तो the right answer की लगता है? The correct answer is C. Vital signs that are outside the expected parameters are significant and should be documented. एग्जाम्स जान तो पहले एक बारी ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ. क्वेश्चन 8 की गल करिए अपने को है what suggestions should a nurse give to a parent to help a 2-month-old infant who has colic. Select all that apply. जिसे ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਕਿ select all that apply ਆਪਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪਿਕ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ. ऑप्शन ए ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ give smaller more frequent feedings. Option B, burp frequently when giving a feeding. Option C, place a warm heating pad on the abdomen. Option D, offer warm sweetened tea when crying begins. Option E, rock the baby gently in a quiet room when crying begins. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਦੀਆਂ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ A, B और C. 9th क्वेश्चन की गल करते हैं. A nurse at the Well Child Clinic determines 1-year-old infant's length to be below what is expected. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਇੱਕ ਨਰਸ ਨੇ ਇਹ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਸੀ. The current height is 28 inches and the birth length was 20. What should infant's current length to be? ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਰੰਟ ਹਾਈਟ ਸੀਗੀ 28 ਇੰਚ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਥ ਲੈਂਥ ਸੀ ਉਹਦੀ 20 ਇੰਚ ਸੀ. ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਰੰਟ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਰਥ ਵੇਲੇ, ਬਰਥ ਲੈਂਥ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੋਂ 50% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ. ਬਰਥ ਲੈਂਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20 ਦਾ 50% ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? 10%. 10% plus 20
उस बच्चे की लेंथ होनी चाहिए 30 इंचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की गल करते हैं, what nursing intervention best meets developmental need of a newborn in the immediate post-operative period? फोर ऑप्शन अपने को ने। ऑप्शन ए गिविंग अ पेसिफायर टू द इन्फेंट, ऑप्शन बी putting a mobile over the infant crib, option C providing the infant with soft cuddly toy, option D warming the infant's formula before feeding। तो द राइट आंसर की लगता है? द करेक्ट आंसर है ए, गिविंग अ पेसिफायर टू द इन्फेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 11 अपने को व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डज अ नर्स एक्सपेक्ट infants and young children who have failure to thrive to exhibit? That all that apply। सेम वही चीज, एक तो बाद ऑप्शन आप चूज करनी है ने। ऑप्शन ए अपने को है हाइपर एक्टिविटी, ऑप्शन बी अपने को है लैंग्वेज डिफेक्ट, ऑप्शन सी अपने को है बीइंग ओवरवेट, ऑप्शन डी अपने को है प्रोनेंस टू इलनेस, ऑप्शन ई अपने को है रिस्पांसिवनेस टू स्टिमुली। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पेरेंट एंड 3-month-old infant are visiting the well baby clinic for a routine examination. What should the nurse include in the accident prevention teaching plan? फोर ऑप्शन अपने को ने। पहले ऑप्शन आपने क्या दिया, रिमूव स्मॉल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फ्लोर, ऑप्शन बी cover electric outlets with safety plugs, option C remove toxic substances from low areas, option D test the temperature of water before bathing। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? The correct answer है D, test the temperature of water before bathing। 13 क्वेश्चन की गल करते हैं। ये अपने को a nurse is teaching a parent how to prevent accidents while caring for a 6-month-old infant. What ability should be emphasized about the infant's motor development? ऑप्शन से मूव करते हैं। पहली ऑप्शन अपने को सिट्स अप, दूसरी ऑप्शन अपने को रोल्स ओवर, तीसरी है क्रॉल शॉर्ट डिस्टेंसेस, चौथी है स्टैंड्स व्हाइल होल्डिंग ऑन टू फर्नीचर। राइट आंसर की है करेक्ट ऑप्शन दिया बी, रोल्स ओवर। 14th क्वेश्चन है। A 7-month-old girl is to be catheterized to obtain a sterile urine specimen. One of the infant's parents expresses fear that this procedure may traumatize the baby psychologically. How should the nurse provide reassurance? Option A अपने को है the floor is justified and the nurse should obtain a clean catch specimen. Option B अपने को है parents have a right to refuse the catheterization and the concerns are realistic. Option C अपने को है although the concern is appropriate, the need for a sterile specimen is the priority. Option D अपने को है the procedure is uncomfortable but there should not be a damaging long-term effect. The right option की है option D, the procedure is uncomfortable but there should not be damaging long-term effect। नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करते हैं। A nurse is assessing the oral cavity of a 6-month infant. The parent asks which teeth will erupt first. How should the nurse respond? ऑप्शन से मूव करते हैं। ऑप्शन ए अपने को इंसिजर्स, ऑप्शन बी अपने को क्नाइंस, ऑप्शन सी अपने को अपर मोलर्स, ऑप्शन डी अपने को लोअर मोलर्स। हाँ जी, तो राइट आंसर की है द करेक्ट ऑप्शन है ए, इंसिजर्स। हाँ जी, अपनी वीडियो इतनी खत्म होनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने साथ जुड़े रहो। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।